Hello, good morning, students. Class 6 students, hope you all are fine. And I hope you have learned unit number 1 and unit number 2. Now we will start our unit number 3, a polar explorer. It means कुतब शुमाली का एक तलाशकार. एक्सप्लोरर मीन्स तलाशकार, जो डिफरेंट जगहों को या चीज़ों को तलाश करता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है. Words to know. As you know, as usual, we will have to know the difficult meanings of the words. Caribou, reindeer. Disputed, disagreed with. Expedition, a journey by a group of people with a clear aim to explore. Encircling, surrounding. Inuit, previously Eskimos, the people who live in the Arctic region. Norway, a country in northern Europe. Obey, to do what you have been told to do by someone in a charge. Ostentatious, deliberate and obvious display. Oslo, the capital of Norway. Pacific, peaceful. Perseverance, persistence in doing something despite difficulties or delays. Reciprocate, repay someone's actions in a similar way. Scrutiny, close, careful examination. Wrecked, destroyed at sea. Now we will continue our lesson, our unit. This unit is about the Amundsen's life. He was an explorer. And Roald Amundsen was born in Norway in 1972. अमंडसन यानी रॉल्ड अमंडसन जो था, ये नॉर्वे में 1872 में पैदा हुआ. एज अ चाइल्ड ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स, और इसने बचपन में ही बहुत सारे बरतानवी जो तलाशकार थे, जो एक्सप्लोरर थे, दरियाफ्त करने वाले थे, उनके बारे में पढ़ा. He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open. वो खेलों की जितनी टीमों में शामिल हो सकते थे, होते रहे. और नॉर्वे की शदीद ठंड में, ठठरा देने वाली ठंड में, सर्दियों में, वो अपनी खिड़कियां खोलकर सोते रहे. Despite the freezing cold, नॉर्वियन विंटर्स यानी ठठरा देने वाली जो सर्दी थी, उसमें वो अपनी खिड़कियां खोलकर सोते थे, नॉर्वियन. सो दैट ही वुड बी फिट, ताकि अगर उन्हें तलाशकार बनने का मौका मिले, सो वह फिट हों, स्ट्रॉन्ग हों, एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, कि अगर उन्हें तलाशकार बनने का या दरियाफ्त करने वाले का एक चांस मिल दे, तो वो फिट हों और स्ट्रॉन्ग हो और हर वक्त रेडी रहें. अमंडसन्स फैमिली वर्क इन द शिपिंग इंडस्ट्री. अमंडसन की जो फैमिली थी, वो शिपिंग इंडस्ट्री में काम करती थी. बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लाइफ एट सी. लेकिन उसकी माँ जो थी, वो उसे समंदर की ज़िंदगी के ख़तरात से अवॉइड करना चाहती थी. मतलब वो चाहती थी कि वो इन चीज़ों में, समंदर की इस ज़िंदगी के ख़तरात में ना पड़े. सो शी एनकरेज्ड हिम टू बी अ डॉक्टर. सो उसकी माँ ने उसको एनकरेज किया कि वो एक डॉक्टर बने. ही ओबेड हिज मदर्स विशेज़. उसने अपनी माँ की विशेज़ को ओबे किया, उनको माना. वाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स. जब तक तलाशकारों के बारे में पढ़ना
جبکہ تلاش کاروں کے بارے میں پڑھنا بھی جاری رکھا، یعنی دریافت کرنے والوں کے بارے میں پڑھنا بھی جاری رکھا. When he was 21 years old، جب وہ 21 سال کا تھا تو his mother died، تو اس کی ماں مر گئی. Amundsen left university and began his life as an explorer. So ایمنڈسن نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور تلاش کار کے طور پر زندگی کا آغاز کر دیا. Now we will read about some of Amundsen's achievements. He was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. وہ بحر منجمد شمال کی شمال مغربی گزرگاہ سے گزرنے والے پہلے انسان تھے. He was in the first expedition to reach the South Pole on 14th December 1911. وہ 14 دسمبر 1911 کے روز قطب جنوبی پر پہنچنے والی پہلی مہم میں شامل ہوئے. In 1926 1926 میں he led a successful expedition to the North Pole. 1926 میں انہوں نے قطب شمالی تک پہنچنے والی کامیاب مہم کی قیادت کی. He is recognized as the first person to have reached both poles. اور انہوں نے دونوں قطبین پر پہنچنے والے انہیں دونوں قطبین یا دونوں پولز پر پہنچنے والا پہلا انسان تسلیم کیا جاتا ہے.